Hello students. Today we will discuss the basic concepts of profit and loss. Let's start with the session. If we talk about profit and loss, there are multiple terms which are used in profit and loss. So firstly, we will discuss about those terms and we will understand how these terms are important and what are the different ways to find the values of these terms. So first, we will start with cost price. This is the very first term and beginning of any question. Cost price, as we know, cost price is the amount in which amount we purchase anything. But I will say, keep one thing in mind, cost price is the amount which anyone spent on anything. अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरर की, तो उसने किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जितना भी अमाउंट स्पेंड किया है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर. अगर मैं बात करूं किसी कस्टमर की, तो जिस अमाउंट में उसने वो प्रोडक्ट परचेज किया है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर. सो कॉस्ट प्राइस वेरीज विद द पर्सन. कॉस्ट प्राइस इज द अमाउंट spent on anything, on the product, or we can say. Now, after the cost price, there is marked price. Marked price क्या होता है? Marked price is the amount जिसके जिसे शॉपकीपर या फिर मैन्युफैक्चरर टैग करता है फॉर द प्रोडक्ट. कॉस्ट प्राइस को हम इंक्रीज करके मार्क प्राइस बनाते हैं. जिस भी परसेंटेज से हम कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करते हैं उसको हम मार्कअप परसेंट कहते हैं. तो अगर मान लो मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज था एंड आई वॉन्ट टू मार्क माई प्रोडक्ट अबव 20%, तो मेरा मार्क प्राइस 120 हो जाएगा. तो मार्क प्राइस इज द अमाउंट वी कैन से CP is marked up by certain percentage. दिस इज योर मार्क प्राइस. इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, MRP भी कहते हैं. तो अगर मार्कअप परसेंट पूछा जाए हमसे कि व्हाट इज द मार्कअप परसेंट, तो मार्कअप परसेंट कैसे निकालोगे? मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम जिस भी अमाउंट से कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर चेकिंग कि वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, एंड दैट इज योर मार्कअप परसेंट. लेट्स मूव फर्दर. मार्क प्राइस के बाद आता है डिस्काउंट. देयर विल बी सम सिचुएशंस जहां पे कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे, तो मार्क प्राइस विल बी द सेलिंग प्राइस. और अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस विल बी डिफरेंट फ्रॉम मार्क प्राइस. डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट विल बी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. बेसिकली मार्क प्राइस से जितना रुपीस कम कर रहे हैं हम, दैट इज योर डिस्काउंट. फिर इसमें परसेंटेज भी आता है. डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट विच इज योर MRP माइनस CP, सॉरी SP, divided by MRP into 100. Now we are comparing the amount of discount with the MRP because discount is a part of MRP. MRP को हम एक सर्टेन परसेंटेज से डिक्रीज करके सेलिंग प्राइस बनाते हैं. जिस परसेंटेज से हम डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज योर डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट देने के बाद आती है हमारी सेलिंग प्राइस.
Selling price is basically in which amount the product is sold. Selling price will also be different for different person. Now, after the selling price, after selling the product, we will go for the profit or loss. Whatever we get, either it can be profit or loss. Profit कब होता है? Profit जब होता है, then your selling price will be more than cost price. और प्रॉफिट अमाउंट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो बेसिकली सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा है दैट इज योर प्रॉफिट. लॉस कब होता है? whenever the cost price is more than selling price, तब लॉस होता है. लॉस अमाउंट क्या होती है? लॉस अमाउंट इज द अमाउंट बाय विच द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे भी परसेंटेज टर्म होता है. प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट क्या है? प्रॉफिट is compared with the cost price. This is your profit percent. Basically, we want to know by what percentage we are getting profit in terms of CP. So profit percent is always calculated on CP. Same goes with the loss percent. Here we will compare loss with the cost price. By what percent I got a loss, we will compare it with cost price. So these are the basic terms and basic formulas we use in profit and loss. Other than that, profit and loss is completely based on percentage basics. The basic calculations are totally based on percentages. So let's take some examples. Let's say the cost price of a product is 100 rupees. Okay. Markup percent is 20%. So basically, I want to mark my product above 20% by cost price. So MRP will be CP plus 20% of CP. यहाँ पे एक और टर्म समझ लो. एमआरपी को मैं सीधा ये कह सकती हूँ दैट एमआरपी इज 120% ऑफ सीपी. दिस इज द बेसिक परसेंटेज वी हैव लर्न्ड. सो यहाँ पे एमआरपी क्या होगा? 120% ऑफ सीपी विच इज 120. लेट्स से आई एम गिविंग अ डिस्काउंट of 10%. Now MRP पे मैं 10% का डिस्काउंट दे रही हूँ. आफ्टर द डिस्काउंट यू विल गेट दी सेलिंग प्राइस. तो मैं ये कहूंगी कि सेलिंग प्राइस विल बी MRP माइनस 10% ऑफ MRP. बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं MRP को 10% से डिक्रीज कर रही हूँ. तो आई कैन से सेलिंग प्राइस इज 90% of MRP, which is 10% less than MRP. तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी? 120 का 10% होता है 12. तो इट विल बी रिमेनिंग 108 रुपीज. तो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 108 रुपीज. जब हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी देन वी विल बी एबल टू सी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. सीपी हमारा 100 था. सेलिंग प्राइस हमारी 108 है. Selling price is more than cost price. So of course we are getting a profit. And profit कितना हो रहा है? 8 rupees का. ठीक है. Now if I talk about what is profit percent here, profit percent we will calculate कि ये जो 8 rupees का profit है, it is what percent of cost price? So 8 rupees will be compared with the cost price, which is your 100 rupees. Now profit is 8%. Okay.
This is the stepwise calculation which you will do. Of course, in any question, you are not getting all the terms. There will be one or two terms and you have to deal with those terms. Let's see further. Now, if I say that we have a selling price which is 180 rupees, and in the question we are given that there is a profit of 20%. So will you be able to calculate the CP? Of course, you are provided with the profit and selling price से cost price तक जाने के लिए हमें profit या loss पता होना चाहिए. यहाँ पे we are provided it with a percentage term. अगर मुझे profit 20% का हो रहा है तो I can say that selling price is CP plus 20% of CP. So here you can say that SP is 120% of cost price. 120% of cost price. SP हमारा 180 है. CP हमें निकालना है. CP will be simply here CP will be 180 into 100 by 120. If we calculate it, 150. Here the CP is 150 and SP was 180. Profit percent is 20%. So if you are provided with a loss percent, let's say the loss percent was 20%. Now forget this one. SP is 180, loss is 20%. In this scenario, you can say SP is 80% of CP. 80% of CP. 180 is equals to 80 by 100 into CP. CP will be yes, it will be 225. So this is how you can relate the different terms. One more we can see. Let's say we are provided with a MRP of 120 rupees and we are given that markup percent is 30%. Markup percent is 30%. Let's say the MRP is 140. Okay. Markup percent is 30%. What will be the CP? MRP is CP plus 30% of CP. MRP is basically the increased amount of CP. So here, we can say MRP is 130% of cost price. Now you can calculate it. We have taken 140. Of course, it is going to have the decimals here. 1400 by 13. This will be your cost price. So this is how you have to relate the different terms. Now let's see some basic questions. One more thing I want you to revise. Here we have seen markup percent. Markup percent is always calculated on cost price because cost price is increased by a certain percentage to make the MRP. Second, discount percentage is always calculated on MRP because it is a part of MRP. MRP will be decreased by a certain percentage, which is your discount percentage.
then it will become selling price. Profit or loss percent is always calculated on cost price, because uh, we can only find the profit or loss with the help of cost price. Profit and loss are the parts of cost price only. Now let's see some questions. Here we have one question. If an article is sold at 8% profit instead of 8% loss, it would have brought 12 rupees more. Find out the cost price of the article. Okay. Article is sold at 8% profit. When you have profit of 8%, you can say selling price is 108% of cost price. Okay. When you have a loss of 8%, you can say selling price is 92% of cost price. One situation is leading me to 108% of cost price and another is leading me to 92% of cost price. Both the values of are of cost price only, common base, which is cost price. So from here, I can see there is a difference of 16% of cost price in both the terms. दोनों सिचुएशन में 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है एंड दे हैव सेड दैट कि अगर लॉस की जगह प्रॉफिट में सेल किया होता तो 12 रुपीज ज्यादा मिलते। मतलब इन दोनों का SP1 एंड SP2 का जो डिफरेंस है it is equivalent to 12 rupees. So from here, I can say that 16% of cost price is equals to 12 rupees. From here, cost price will be 12 into 100 by 60. Our answer will be 75 rupees. Our cost price will be 75 rupees. तो यहाँ पे अगर हमें ये कॉमन बेस वाला कॉन्सेप्ट आता है देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। कॉमन बेस है कॉस्ट प्राइस का दोनों जगह, एक जगह 92% है, एक जगह 108% है, तो दोनों का डिफरेंस है 16% ऑफ सीपी। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। In this question, we are provided if Pawan is making a profit of 25% on selling price, then what is his actual profit percentage? We know कि profit percent हमेशा किस पे calculate करते हैं हम? Cost price. But here they are saying 25% on selling price. Basically what they have done is profit by SP into 100, which is 25%. Selling price पे 25% का profit हो रहा है। From here, profit क्या होता है? Profit is SP minus CP. Okay. अगर ये क्वेश्चन मैं देखूं तो मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि SP का 25% जो है वो प्रॉफिट के बराबर है। दिस इज यू कैन से। तो अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 1/4 आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, इट विल बी 1/4। प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो है 1/4। तो वी कैन से कि प्रॉफिट और SP 1:4 के रेशियो में है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस इज 4 minus 1, which will be 3. Basically what we are doing is we are taking it in ratio form only. We are not looking for any values.
because we are not provided with any value in the question. So here CP is 3. So our प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट 1 था, सीपी 3 है, तो आई कैन से कि प्रॉफिट विल बी 33.33%. यहाँ पे द प्रॉफिट परसेंट वाज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, सो वी लुक्ड इनटू इट एंड वी converted it till CP, then we calculated the actual profit percentage. Let's move to the next question. A manufacturer adds 10% to the cost while selling to the shopkeeper, who in turn adds 15% to his cost price while selling to the customer. If the customer pays for the product, what is the manufacturing? So here we are seeing what I have said कि हर पर्सन के लिए अलग अलग कॉस्ट प्राइस होगी जिस अमाउंट में उसने वो प्रोडक्ट खरीदा है या बनाया है. तो यहाँ पे एक प्रॉपर साइकिल है. लेट्स से मैन्युफैक्चरर ने एक्स रुपीज में मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट, देन उसने क्या किया, 10% और ऐड किया और किसको सेल कर दिया? शॉपकीपर को. तो मैं कह सकती हूं कि एक्स का 110% अमाउंट है, उसमें शॉपकीपर ने परचेज किया है. फिर शॉपकीपर ने क्या किया? ही एडेड 15% to the amount in which he purchased the product, then he sold it to the customer. So this was the amount in which the shopkeeper has purchased the product. This amount will be increased by 15%. So I can say further that the 115% of this amount is the amount जिसमें customer ने purchase किया है, which is given 5,060 rupees. Now we will simplify this. $460 4 times x की वैल्यू आ जाएगी 4,000. So 4,000 was the amount in which the manufacturer produced the product, or you can say the manufacturing cost of the product. So here we have seen that there was a certain cost price which is X rupees. It got increased further and further. Firstly, it was increased by 10% by manufacturer. Then shopkeeper increased it with another 15%. So it got increased 2 times. So we can say that this is a example of successive increment. यहाँ पे X में successive increment हो रहा है 2 times का. Let's see the another question. By selling an article for rupees 816, okay, 816 is selling price, a shopkeeper incurs a loss of 20%. At what price should he sell the article so as to gain 10%? यहाँ पे 816 में सेल करने में उसको 20% का लॉस हो रहा है. So here you can say that selling price is CP minus 20% of CP, because loss is the amount which got with which the CP got increased and it decreased and it become the selling price. So I can say 80% of cost price is 816. What will be the cost price? Cost price will be 816 into 100 by 80. We will simplify it. We got the cost price 1020, but they are saying at what price should he sell the article so as to gain 10%.
नाउ दे आर आस्किंग द सेलिंग प्राइस जिसमें उसे 10% का गेन हो रहा हो, मतलब 10% मोर विल बी एडेड टू गेट द सेलिंग प्राइस. 1020 इज योर सेलिंग प्राइस. इसका अगर मैं 110% निकालूं तो आई विल गेट द सेलिंग प्राइस इन विच देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10%. So final selling price will be 1122. This is the amount in which if the shopkeeper sells the product, he will gain 10%. So here 816 was 80%. We can do this question directly. Basically what we are doing is कि 816 जो है वो 80% of cost price है. What they have asked for is, sorry, 110% of cost price. So we can calculate it directly. You will get 1122. Okay, so this was a question. Let's see the final question. By selling 6 dozen oranges, a person loses selling price of 1 dozen oranges. What? Find his percentage loss. So basically, when he was selling 6 dozen oranges, let's say the SP of 1 dozen is 1 rupees. Okay. The loss is equal to 1 rupee here. Selling price of 1 dozen rupee, which is 1 rupee. Loss क्या होता है? Selling price minus, sorry, cost price minus selling price. तो यहाँ पे लॉस मुझे 1 रुपए का हो रहा है. ओके. एंड सीपी वी डोंट नो सेलिंग प्राइस कितनी होगी यहाँ पे 6 रुपीज होगी. ओके. कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 7 रुपीज. लॉस 1 रुपए का था तो लॉस परसेंट कितना होगा 1/7 into 100, which is 14.28%. Basically, this question is same we did a earlier question, जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया था. यहाँ भी हमें लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया है. तो व्हाट वी डिड इज कि हमने पहले कॉस्ट प्राइस लिया एंड वी अज्यूम्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 dozen as 1 rupee, but we don't know the cost price. So we got that कि 6 dozen का cost price 7 rupees है. So then we got the loss percentage, which is 14.28%. So selling 6 dozen oranges, selling price is 1 rupee per dozen. Loss is SP of 1 dozen, which is 1 rupee. Loss is equals to cost price minus selling price. We see that 6 dozen he is selling, then 6 rupees is selling price, 1 rupee is loss, cost price is 7 rupees. Then we got the loss percentage. So this was the final question. So here we are done with the session. I hope you understood well the concepts of profit and loss. Thank you.